सारे लोग कैमरा ऑन कर लें मेरे ख्याल से, अगर ठीक रहेगा। क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? रोल नंबर 18 is there, Abhijit is there, Utsav Raja is there, Rajat Kumar, Priya Gupta is there, Rohit Raj is there, Akash Kumar है, अभिषेक है, आशुतोष है, दीपक कुमार है, बस इतने ही लोग हैं। चलिए खैर, तो आज हम लोग को कुछ कुछ नया पढ़ना था। यस सर। क्या पढ़ना था नया बताइए। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, कैमरा ऑन कर लो। जिसके वहां से भी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है क्लासेस का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। किसके साथ शुरुआत करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप में से कोई बताएगा ये इक्विटी शेयर क्या होता है? अभिजीत, Yes, sir. क्या है The equity share is a owner fund source based, and it have a voting right also by the owner and a member of a company, and it by the profit of a company. मेरा सवाल है, more or less I have got the answer. What he says कि इक्विटी शेयर्स को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, और बेसिकली ये कंपनी के ट्रू ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये कंपनी के ट्रू ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है, वोटिंग राइट्स का वो इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिलेक्शन में, उसको हटाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड। दोनों में से क्या मिलेगा उसको? इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड मिलेगा। वेरी गुड। दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड्स। इंटरेस्ट जो होगा वो डेट ओनर को देते हैं, जो डेट होल्डर होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सपोज टू रिसीव डिविडेंड्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगेन माय क्वेश्चन टू यू इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अ कंपल्शन? Is the payment of dividend a compulsion? That whenever a company is making profit, it needs to pay dividend to the shareholders or the equity shareholders? The answer is no. It totally depends upon the company management, it totally depends upon the company management, which is quite professional, and it decides कि भाई, is there any possibility of giving dividends? If they feel so, they can give. Otherwise, the company is not obliged, is not always it is essential for the company to pay the dividend to the shareholders. Now the dividend which is paid to the equity shareholder is known as equity dividend. क्या कहा मैंने? The dividend which is paid to the equity shareholder is called equity dividend.
और अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा तो उसको हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। खैर एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें कि आखिर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी ने इक्विटी को इशू करके फंड रेजिंग का सोचा है तो इक्विटी के थ्रू फंड रेजिंग थोड़ा महंगा पड़ता है। इक्विटी के थ्रू फंड रेजिंग थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि वो जो नेट प्रॉफिट है उसमें से आप उसको पे करते हैं, और वो जो डिविडेंड कंपनियां पे करती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इट इज नॉट सब्जेक्ट एज अलाउएबल एक्सपेंस, और वो उससे नेट प्रॉफिट घटता नहीं है। और जब नेट प्रॉफिट घटेगा नहीं तो टैक्स लाइबिलिटी भी कम नहीं होगी। इस रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा महंगा अफेयर है, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Cost of equity share is a part of cost of capital. Cost of equity share is the part of cost of capital which allows the payment to only the equity shareholders. Only the equity shareholders, full stop. In this, every shareholders get the shares for getting the return on the shares on which they are investing. Full stop. From company's point of view, comma, from company's point of view, comma, it must earn more than cost of equity capital, must earn more than cost of equity capital in order to be unaffected by the market value of its shares. Full stop. There are several methods of calculating the cost of equity.
हाइफन दे दो, पहला पॉइंट लिखना डिविडेंड यील्ड मेथड और प्राइस रेशियो मेथड। पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, फर्स्ट वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड और प्राइस रेशियो मेथड। लिखिए हाइफन देके, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड according to this method, comma, the cost of equity share will be equal to the cost of equity share will be equal to the present value of future dividend, the present value of future dividend per share in respect to the current price of the share, in respect to current price of the share। फॉर्मूला लिख लेना इसमें, cost of equity is equal to cost of equity is equal to dividend per equity share by market price, dividend per share DPS by market price। याद कीजिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जब हम लोग रेशियो एनालिसिस की पढ़ाई कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट था डिविडेंड यील्ड रेशियो। यस सर था। यस सर। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? डिविडेंड यील्ड रेशियो वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, isn't it? अब आप सोचिए अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो मैं डिविडेंड जो है वो तो फ्यूचर की चीज है, फ्यूचर में मुझे पे करना है, तो फ्यूचर में जो डिविडेंड आप पे करेंगे उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू में दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू में नहीं दिया हुआ है तो आपको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब वो कन्वर्जन हो गया, अब तब आप क्या करेंगे? उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और फिर आप उसको अगर चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ गया डिविडेंड यील्ड मेथड के सहारे या प्राइस रेशियो मेथड के सहारे। सर प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर फ्यूचर में दिया हुआ है तो? डिस्काउंटिंग रेट नहीं आता है, डिस्काउंटिंग नहीं पढ़ते।
NPV. अच्छा अच्छा, यस हाँ यस सर, आ गया समझ। So लिखो the question. If a company issues equity shares of rupees 200 each at a premium of 10%, Sir, 200 each. at a premium of 10%, and the company has the track record of paying 20% dividend to equity shareholders for the past 5 years, and is expected to maintain the same in the future. आगे लिखिएगा. Compute the cost of equity if hyphen नीचे number 1 market price is rupees 210 या हाँ चलो ठीक है. और दूसरा लिखो market price is rupees 260. बनाओ तो. सर मार्केट प्राइस रिपीट करिएगा। 210 और 260.
इसका कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या बुक में? देखो तो मेरी आवाज मिल पा रही है? Yes, sir. मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. बुक में देखो तो दिया हुआ है क्या कोई क्वेश्चन? यस सर, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन। Sir, a company has 20,000 equity share of rupees 10 each, fully paid. The current market price per share is rupees 20. Earnings available to the shareholder at end of the period under consideration is rupees 60,000. Calculate cost of equity using uh, earning or price ratio. तो इसमें फॉर्मूला क्या डाला है? So earning per share is equal to cost consideration divided by cost of equity. नहीं, number of equity है। उसके बाद सब बस इतना ही है। और फिर करंट मार्केट प्राइस निकाला है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So cost of capital का फॉर्मूला है E divided by P. समथिंग एल्स? और भी कोई क्वेश्चन है क्या? No sir. तो कितना आया इसका आंसर देखो तो। So आंसर है 15%. चलो बनाओ तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बनाओ जो अभी क्वेश्चन दिए हैं। Then 19.04. 19.04। तुम लोग का आया क्या? सर मेरा 9.52 आ रहा है, 523। कैसे निकाल लिए? उससे ज्यादा कैसे निकाले, कुछ बताओगे हमको? सर 200 का 10% 20 रुपया, और सर 20 बाई डिवाइडेड मार्केट प्राइस सर 210। 10% क्यों किए? सर क्योंकि पेइंग कर रहा है सर 10%। और 20% जो लिखा है वो क्या है? यस सर, छूट गया मेरा। अरे 10% तो प्रीमियम पे इशू किया बाबू। यस सर। डिविडेंड का रेट तो 20% है ना? यस सर, यस सर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर
ये दिया हुआ है 200 और डिविडेंड हमेशा जो दिया जाता है फेस वैल्यू पे दिया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड 20% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 40. 40. चालीस। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 210. 210. तो 210 वाले में हो जाएगा 40 बटा 210 गुने 100, यही तो होगा। Yes sir, 19.04. और अगर 260 होता तो 15.38. 40 बटा 260 कितना हो रहा है? 15.38। 38. आगे लिखो, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। क्या सर? डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। हाइफन देके लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट कंपनी इज it is based on the theory that the company is growing and its share value एक मिनट and its market value of shares is also Sir, that the company is growing and the market value of the company is also on the rise. Full stop. Under this situation, the shareholders of the company under this situation, the shareholders of the company are also expecting an increase in the dividend. An increase in the dividend. Full stop.
फुल स्टॉप नहीं, यहाँ चलो ठीक है फुल स्टॉप. The expectation of this expectation of the shareholder is based on the assumption that the profits of the company will rise with the growth in the company. इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर ये फॉर्मूला शायद बुक में भी होना चाहिए. देखो, मार्केट प्राइस प्लस जी, इसको हम लोग कहते हैं डी बाई बी पी प्लस जी. देखो है क्या ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir, है. जहाँ पे डी का क्या मतलब लिखा हुआ है देखो तो. Sir, dividend per share. इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ है. Yes, sir, दिया हुआ है. क्या है क्वेश्चन पढ़ो एक बार. The current price of an equity share is rupees 20%. The dividend are expected to grow रुपीज at 20%. हेलो, no, फिर से sir. पढ़ो एक बार. So the current price of the equity share is 20%. The dividend are expected to grow at the rate of 5%. Calculate the cost of equity based on dividend growth model. इसमें डिविडेंड तो दिया नहीं है. So dividend are expected to grow. सर उसका growth दिया हुआ है 5% के rate. मार्केट सर प्राइस जी, तो सर सर, जी ये दी ना- है 5%. Yes, sir. हाँ जी 5%. यस और सर. हाँ, और डिविडेंड कितना दिया हुआ है 20. 20%. और मार्केट प्राइस तो नहीं दिया है. No, sir. Market price नहीं है. तो मार्केट प्राइस को क्या एज्यूम किया है इन लोग, देखो तो Sir, नीचे. 20. और डिविडेंड को कितना एज्यूम किया है. Sir, dividend को rupees 2. डिविडेंड तो 20% दिए हुए हैं. Sir, 20% तो दिया हुआ है, लेकिन rupees 2 square. वो मार्केट प्राइस के लिए लिया है ₹2 into 10. नहीं, गलत था वो. चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखवा रहे हैं. A company issued rupees 50 shares. The company issued rupees 50 shares of the value of rupees 2 lakhs. The company has
the history of the company has the history of paying dividends at 15% या at एक काम करो at 14% per annum over the last 3 years full stop. The dividend is expected to grow by 5% comma the market price of the share and the market price of the share is expected to be your market price of the share is expected नहीं कीजिएगा is rupees 91 full stop. You are required to calculate the cost of equity. You are required to calculate the cost of equity on dividend yield plus growth model. बनेगा क्वेश्चन? हेलो यस सर. देखो बनाओ क्वेश्चन फटाफट. और इस वीक में मेरे ख्याल से लास्ट जो होगा दैट इज ऑन फ्राइडे. फ्राइडे तारीख हो जाएगी 24 26 28 तारीख को आप लोगों का मार्क्यू लूंगा मैं. ठीक है क्लास? सिलेबस में सिर्फ लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास इन द सेंस कि प्रीवियस मंथ में क्या हुआ था? नहीं प्रीवियस मंथ में क्या पढ़े थे हम लोग? कॉस्ट ऑफ ये कैपिटल बजटिंग पढ़े थे ना? यस सर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल बजटिंग पढ़े थे, तो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. कैपिटल बजटिंग पूरा चैप्टर आएगा. सर पूरा चैप्टर नहीं है. कैपिटल बजटिंग पूरा चैप्टर, कैपिटल बजटिंग
Sir, 12.6 are the answer. तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी लोग भी बना के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखते हैं इसका आंसर।